कर देता हूँ। हाँ, so so अभी का न्यूज है। सो मार्च टुडेज डेट इज मार्च 9th। अभी इंडिया में टाइम है 8:25 AM। ओके, सो न्यूज है बेंगलुरु में एडवोकेट्स आर प्रोटेस्टिंग क्विक पोस्टिंग ऑफ बेल प्ली ऑफ बीजेपी एमएलए। जो बीजेपी एमएलए जिसके घर से पैसा में बरामद हुए, उसके लिए एसोसिएशन एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु has expressed concern over quick posting of the interim anticipatory bail application of BJP MLA Madal Virupaksha, facing charges of collecting bribes through his son Prashant Kumar MV. The Congress to raise the questions over it, say that this will not happen without the government support. The MLA who has वो पिछले 5 दिन से वो बंदा वो जो एमएलए है वो एब्सकॉन्डिंग में है। एब्सकॉन्डिंग बंदे को उसको बेल भी मिल गया एंड उसको राउजिंग वेलकम भी मिल गया। सो एक आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में, मच एडो अबाउट नथिंग। इस आर्टिकल में लिकर स्कैम के बारे में, द सो कॉल्ड लिकर स्कैम रिमेन्स ओनली इन एलिगेशंस एंड इन हाईली डाउटफुल इफ इट कैन रीच एनी लीगल कंक्लूजन बोल रहे हैं। सो बेसिकली इस लिकर स्कैम में यही बोला जा रहा है कि 1-2 साल के लिए 2024 की इलेक्शन तक इसको चला चला के आम आदमी पार्टी को डुबा डुबा के आगे चलाओ एंड 2024 की इलेक्शन खत्म होने के बाद ऐसा ही स्लोली ये डेथ पे चला जाएगा। दे विल नॉट फाइंड एनीथिंग अबाउट दैट। दैट्स व्हाट एक पट्टा भी एक बंदा है, उस बंदे का नाम है, एक मिनट अभी बता देता हूँ मैं। पट्टाभी वेमुलपट्टी, ही इज ए डिजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल में बोला है कि सीधी सी बात है कि बीजेपी जस्ट वांट्स टू विन द 2024 इलेक्शंस। वो जब तक 2024 इलेक्शन जीतेगा नहीं, ऐसा ही इस केस को आगे रख के आम आदमी पार्टी को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी एंड ये इसका कोई हाल निकलेगा नहीं, ऐसा वो बोल रहे हैं। इसमें केस ही नहीं है, ऐसा एक सीनियर एडवोकेट तेलंगाना वो बोल रहे थे। The court observed that merely because the Lokayukta police has raided the office of the MLA's office and seized a bundle of notes cannot give inference that both of them are involved in huge corruption scandal. So इस केस के जो कुछ भी हो वो सब कुछ मीडिया में नहीं चलना चाहिए, ऐसा बेंगलुरु की हाईकोर्ट ने, कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला है। दिस इज द शेमफुल पार्ट, रियली कोर्ट्स ऑफ इंडिया आर सो करप्ट नाउ, इट इज सो बैड एक्चुअली। लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर एक मेधा सोशल वर्कर मेधा पाटकर के ऊपर मार्च 2002 में एक असॉल्ट केस है। The case was registered against 4 people including Saxena in Sabarmati police station. The hearing of this case is going on in the Metropolitan Court of Ahmedabad. 2 other BJP MLAs and an advocate are also among the accused. Charges were framed, but Lieutenant Governor बोल रहे हैं कि I am the Lieutenant Governor in this case. क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुड बी स्टॉप्ड अगेंस्ट मी। दिल्ली का एलजी ने सुप्रीम अहमदाबाद कोर्ट में ये एक एप्लीकेशन डाला है। केजरीवाल पे ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी इन राजघाट बिफोर डे लॉन्ग पूजा ऑन द हॉलीडे। There was a request for Manish Sisodia to be kept in the Vipassana cell of the jail and the same was approved by the court. Despite the court's approval, Sisodia has been kept with criminals in jail number 1. The center must give the answer, सौरभ भारद्वाज ने बोला है ये। Summer hasn't even begun and water crisis looms in the capital due to an illegal sand mafia. Authorities should deal with the menace quickly and firmly to stop the problem from escalating. सौरभ भारद्वाज ने बोला है। बीजेपी wants to kill Manish Sisodia, आम आदमी पार्टी ने बोला है। आम आदमी पार्टी has made a huge allegation against BJP. Center debilitating
MP lots slowly from a total entitled fund of 3,857.5 crores to MPs. Only 767.5 crores were released in 2022-2023 as on March 7th. अभी 2 महीने बाकी है ये साल खत्म होने में. इस साल में अभी तक 3,857 crores में ओनली 767 crores इन्होंने खर्च किया है या रिलीज किया. खर्च तो छोड़ो, रिलीज ही किया है इन्होंने. दिस इज अनदर ओनली. इट इज लेस देन 20% ऑफ द मनी दैट वाज रिलीज्ड बाय द सेंटर. लिटरली बहुत कम रिलीज कर रहे हैं. आम आदमी पार्टी सरकार वर्ष 2050 के बेअब्दी मामले में शामिल दोषियों के लिए सजा सुनिश्चित करेगी. भगवंत मान ने बोला है ये कल असेंबली पंजाब असेंबली में बोला है. Sisodia's arrest will not have much impact on Aam Aadmi Party. Rather, they will use it against the Bharatiya Janata Party in the upcoming state assembly elections, as well as 2024 parliamentary polls. Political expert Sanjeev Kaushik ने बोला है ये. Direct release of Sisodia unconditionally. Stalin has written a letter to PM, Prime Minister. In accordance with the wholehearted commitment of government to undertake welfare-centric measures for every section of the society, Cabinet Minister Chetan Singh Joramachra at Samna distributed 25 tricycles out of his own pocket to the differently able people hailing from the poor strata. फिर इसके बाद the country's current data rules mirror the EU's general data protection regulation. The comprehensive legislation adopted in the bloc in 2016 that protects the personal data protection के लिए अश्विनी वैष्णव ने बोला है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल में ये यूरोपियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन बिल के साथ कनेक्टेड है. उसकी रेगुलेशन जीडीपीआर से हम लोगों ने इसको मिरर किया है बोल रहे हैं, बट आई डोंट थिंक इट्स राइट. India's 1-year government debt yield rose about 10-year bond yields on Wednesday, following higher than expected cutoffs at a treasury bill sale, inverting the yield curve for the first time in the history of India. ये yield curve में problems आएगी अभी इंडिया में, क्योंकि ये बॉन्ड जो भी है ना 1-year बॉन्ड से डेप्ट बॉन्ड्स से लेके 10-year डेप्ट बॉन्ड्स तक हर एक डेप्ट बॉन्ड को डिफॉल्ट नहीं करने दे रहे हैं गवर्नमेंट, एंड दे आर नॉट इवन पेइंग. सो क्या कर रही है, एक बॉन्ड को पे करने के लिए दूसरा बॉन्ड ले रही है. सो लिटरली इंडिया में पिछला 8 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिलीज 872 बॉन्ड्स रिलीज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. इस 872 में इंडिया ने अभी तक ओनली 7 बॉन्ड्स को चुकाया है गवर्नमेंट ने, एंड बाकी के सभी बॉन्ड्स को गवर्नमेंट रिन्यू कर रही है और उनको चुकाने के लिए दूसरा बॉन्ड्स लेके आ रही है. सो यू कैन अंडरस्टैंड द इकोनॉमी इन इंडिया नाउ. Maharashtra's economy is expected to grow by 6.8% in financial year 23, as against the projected growth of the Indian economy by 7% as per the Economic Survey 2022-2023 tabled in the State Assembly election. The prices of wheat have slumped from record high. The prices of wheat have slumped from record high of rupees 3,200 rupees per quintal in mid-January to about 2,100 to 2,200 2,100 to 2,200 rupees per quintal after the government started selling the cereal from its own stock to tame the prices. इतना रिकॉर्ड हाई प्राइसेस से ये इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट खुद सेल करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम इट्स ओन स्टॉक. इंडिया में वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है. Wages grew slower for women compared to men since the COVID, increasing the pay parity. Post-COVID, wages grew slower for women. According to the ET analysis found that between 2017, 2018 and 2021-2022, the annual growth rate of women's wages at 4.5% in urban areas was lower than that of men, which was 5.2%. In rural areas, wages for men increased by 4.9% compared to 4.6% for women.
The share of women in the self-employed category, which includes unpaid household work, went up from 51.9% to 62.1% between 2017-18 to 2021-2022. Respiratory infections contracted during early childhood are associated with increased risk in death from respiratory illness as an adult, according to a new study published in the Lancet. Um, ये जो एमपी लैड स्कीम में किस किस के स्टेट्स के बारे में अगर देखा जाए, तेलंगाना हैज रिसीव्ड द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी इट सीम्स. तेलंगाना को एंटाइटल्ड फंड 110 करोड़ होते हैं, तो उसको ओनली 15 करोड़ मिला है, दैट इज 13%, व्हिच इज लेस देन द नेशनल एवरेज. मेजॉरिटी शेयर ऑफ द एमपी लैड्स फंड्स किसको मिला है? बीजेपी रूल स्टेट्स को ही मिला है. लाइक फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश को 127 करोड़ मिला है, कर्नाटका को 37 करोड़ मिला है. बीजेपी which was earlier governed by बिहार which was earlier governed by बीजेपी, उसको भी सब्सटैंशियल 70 करोड़ मिला था. जब से वहां पे गवर्नमेंट चेंज हो गया है, वहां पे ओनली 2 करोड़ मिला है. द ओनली अदर नॉन बीजेपी स्टेट जहां पे उनको पैसा मिला है, दैट जहां पे उसको अच्छी तरह से एमपी लैड्स का स्कीम के तहत पैसा दिया गया है, वो है ओडिशा. ओडिशा को 60 करोड़ मिला है. बाकी के सभी नॉन बीजेपी स्टेट्स को कोई भी पैसा मिला ही नहीं है. द मैक्सिमम नॉन बीजेपी स्टेट जहां पे ज्यादा पैसा मिला है, वो है, आई थिंक इट इज सो शेम टू से, वो है तमिलनाडु. 21 करोड़ मिला है उसको. तमिलनाडु को 21 करोड़, दैट इज द हाईएस्ट दैट नॉन बीजेपी स्टेट मिला है. दिल्ली जो में एमपी लैड स्कीम में दिल्ली में मिला है 4 करोड़ मिला है. वी ऑल नो कि दिल्ली में 7 एमपी से लोकसभा में एंड 3 राज्यसभा में है. 10 एमपी से पूरी मिला के ओनली उनको 4 करोड़ मिला है. एवरी ईयर ये the MPs of both the houses, including nominated members, are empowered to recommend development programs in their respective constituencies. Every year they are allocated 5 crores to spend on the development program. The scheme was first introduced by then Prime Minister PV Narasimha Rao. आप अगर देखा जाए तो एमपी लैड्स स्कीम में an estimated 7,800 crores 2016-2017 से लेके दिया जाता था. However, the scheme was restored in November 2021. कोविड के टाइम पे उसको सस्पेंड किया था, बट 2021 नवंबर 2021 में फिर से शुरू किया, एंड इट विल बी कंटिन्यूड अप टू 2025-2026. So ये जो स्कीम में जो फंड्स आते हैं वो नॉन लैप्सेबल एंड इंटरेस्ट accrued on the funds could be used for allowed works recommended by the MPs. However, the BJP government revised the rules and made it mandatory to remit the interest accrued on the funds to consolidated fund of India. इस पे जो भी इंटरेस्ट होता है वो भी MPs should be able to how is MPs should be able to use it on the locations where they are using it. उसको अभी निकाल दिया गवर्नमेंट ने. उस पे जितने भी इंटरेस्ट होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाता है, ताकि इंडियन गवर्नमेंट प्रधानमंत्री यूज कर सके कहीं पे. जीडीपी ग्रोथ में एक्चुअली श्रिंक बिलो 4% इन Q4. एक न्यू रिपोर्ट आ रहा है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के. National Statistical Office in its second advanced estimate has said that GDP growth at 7% for the full year can be very difficult, and it said that growth can be 5.1%, and also it said that for the fourth quarter 4% GDP growth will be running on a limb. बोला है. Indian market large enough for all players. Emirates ने बोला है, Emirates is going to come into Indian market now, local market. Air India says 15% of its total pilots will be female by the end of this year. Apple to put bigger focus on India by making it a separate region. Onion prices and potato prices कम हो रहे हैं. आपको पता होगा prices of these commodities have seen perhaps the wildest fluctuations in agricultural commodities among all crops for multiple regions. इसका कम होने से actually this is not a positive change.
ऑल द फार्मर्स आर सेइंग दैट इसका प्राइसेस कम होने से उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहे हैं। वो क्यों कम हो रहे हैं? बिकॉज ऑनियन एंड पोटैटोस आर बीन एक्सपोर्टेड इन इनटू इंडिया। इसका सॉरी इंपोर्टेड इनटू इंडिया। इसका इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने निकाल दिया है, इसीलिए ये उनका प्राइसेस कम हो रहे हैं। एंड दिस इज डिस्ट्रेसिंग द फार्मर्स इन इंडिया इट सीम्स। एक्साइज स्कीम केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने हैज ग्रांटेड बेल टू हैदराबाद बेस्ड चीफ बुच्चीबाबू गोरंट्ला। यही एक्साइज केस माने लिकर पॉलिसी केस है। मेयर इंस्पेक्ट्स दिल्ली का मेयर इंस्पेक्ट्स माता गुजरी हॉस्पिटल एंड मीट्स A&C डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स। Delhi uphold assails before High Court delisting of its 123 properties। गवर्नमेंट ने उसका delisting किया था। फिर उसके बाद दिस इज वेरी डिस्ट्रेसिंग न्यूज एक्चुअली। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर का पर्सनल स्टाफ is actually attached to 20 house committees it seems। The officer supposed to assist the committees in their work, which includes meetings that are confidential in nature। but interestingly जगदीप धनकर की पर्सनल स्टाफ के लोग एमपीज जो कुछ भी ये कमिटीज में बात करेंगे वो सब ये लोग देखेंगे। सो बीजेपी इज नाउ गोइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल द कम्युनिकेशंस दैट आर गोइंग टू हैपन इन पार्लियामेंट। the the senior Rajya Sabha MP said that the order is unprecedented, and in the parliamentary affairs it is one of the worst things that can ever happen। 8 officers belonging to the personal staff of Vice President and Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar has been attached to 12 standing committees and 8 department-related standing committees, drawing criticism from all over the opposition। The interesting fact is that all the documentation that are supposed to happen in the Rajya Sabha and also in the standing committees are now will be run by the personal staff of Rajya Sabha Chairman Jagdeep Thakur, which is against the parliamentary ethos। इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है ये, शर्म आनी चाहिए। दिस इज अनदर वन। NRA youth killed at Anantapur Sahib came from a family of soldiers. Father, a serving captain, was training as a tattoo artist। Pradeep Singh had come to pay obeisance at Sri Anantapur Sahib on the eve of Hola Mohalla when he objected to some men who were using loudspeakers in their jeeps to play songs। Pradeep Singh was murdered by a group of hooligans at Anantapur Sahib on Tuesday. Came from a army personnel। His father Gurbaksh Singh is an honorary captain in Indian Army and is due to retire in May this year, while his uncle Gurdel Singh retired as Havaldar from the Indian Army recently। Ask state governments to provide mandatory cover for uninsured vehicles। IRDAI ने बोला है ये। Adani has pledged 2 corporations a day। So Adani is pledging shares of 2 companies a day after releasing 4 firms। A day after Gautam Adani released 7,374 crores of pledged shares related to 4 of his companies, the group's chairman has pledged more shares of 2 companies, Adani Transmission and Adani Green Energy, to supply loans taken by flagship Adani enterprises। According to regulatory filings, shares representing 0.76% of Adani Transmission and 0.99% of Adani Green Energy equity capital have been pledged with SBI Cap trustee। अभी इसको भी डुबाएंगे ये लोग रखते हैं। At current prices, the pledged shares are worth rupees 16,170 crores। After the additional security, the quantum of shares pledged by the business cycle stands at 1.32% of Adani Transmission and 2% of Adani Green Energy, up from 0.1%। CAG pulls up NAAC for discrepancies in the process। CAG ने National Assessment and Accreditation Council for glaring discrepancies in its assessment processes। The country's quality assessment board awarded arbitrary grade points to several higher education institutions across the nation। The CAG has said in a note sent to NAAC with queries asking it to respond।
शरद पवार की एनसीपी नागालैंड में बीजेपी की गवर्नमेंट में शामिल हो रही है। ऑब्वियसली वी ऑल नो शरद पवार की पार्टी अपोजिशन में है महाराष्ट्र में। एमएलए फ्रॉम एमएलए बच्चू बाबूराव काडू, ये कहाँ के एमएलए है? नासिक में अचलपुर का एमएलए है। ओम प्रकाश अलियास बच्चू बाबूराव काडू हैज बीन imprisoned to 1 year imprisonment each on two charges of assault on public reservant and intentional insult on July 24th 2017। फिर इसके बाद okay, communal cases are on the rise in Karnataka, 122 since 2019 after multiple years of declining trend. Communal cases decline हो रहा था कर्नाटका में after multiple years of declining trend. The number of communal incidents in Karnataka appear to be increasing, with the state reporting one such incident every 12 days on average between January 1st 2019 and February 15 2023. As per the data from the Home Department, cases in 2022 more than doubled from the previous year to touch 63. While 2021-2022, the two COVID years have also seen more cases than 2019, indicating an increasing trend. This year has seen one case as of mid-February reported in Kolar. 2016 में 42, 2017 में 92, 2018 में 29, 2019 में 12, 2020 में 21, 2022 में 25, 2021 में 25 और 2022 में 122। Overall, the state with nearly 50% of them coming in 2022, and the Home Department data puts Shivamoga 24, Dakshina Kannada including 90 in Mangaluru city, वहाँ पे 19, Devanagiri 18, Haveri 10 among the districts with the most cases it seems. कर्नाटका गवर्नमेंट बोल रही है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज द रीजन फॉर द इंक्रीज इन द कम्युनल इंसिडेंट्स इन कर्नाटका इट सीम्स। उसके ऊपर डाल रही है सब कुछ। हाँ। कर्नाटका सॉरी पंजाब पंजाब कांग्रेस has appointed in charges and co-in-charges for जलंधर बाईपोल बाईपोल के लिए। फिर इसके बाद सो India faces high power cut risks after years of coal hydropower neglect. A rapid addition of solar farms has helped India avoid daytime supply gaps, but a shortage of coal-fired hydropower capacity risks exposing millions to widespread outages at night. So, on an average, in India, nighttime peak demand is expected to hit 270, 200 217 gigawatt, up from 6.4% on the highest nighttime levels recorded in April last year. The situation is little stressed, Grid Controller of India, Grid India, said in a note on February 3rd. India's power availability in non-solar hours this April is expected to be 1.7% lower than the peak demand, a measure of the maximum electricity requirement over any given time. An internal note by the federal grid regulator reviewed by the Reuters India has said this. Uh, So, India's Federal Power Secretary Alok Kumar downplayed concerns, saying that the government has taken all steps to avoid power cuts. We are making capacity available to all states at competitive rates. बोल रहे हैं. According after the Grid India reports, the government brought forward maintenance at some coal-fired power plants and secured the extra gas-fired capacity to try to avoid outages. Again, another senior government said this.
there would be more than 11% from the last year when you compare with this year. Hydropower will be crucial not only to meet much of the remaining supply, together coal, natural gas, and nuclear capacity are expected to meet 83% of the peak demand at night, it seems. हाँ गौरव बोलो. Okay, I am